बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशन पे। लीग ऑफ नेशन क्या था, ये कैसे बना, इसके एम्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और इसके फेलियर्स क्या थे, और इसके रीज़न फॉर इसके फेलियर के रीज़न क्या थे। सो आइए चलते हैं, अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। So, League of Nations. League of Nations, the covenant of the League of Nations was built into the Treaty of Versailles at the end of the First World War. The main background or the power behind the League of Nations was the Treaty of Versailles. The League was well dream for a new world, a new way of conducting foreign affairs that would abolish war and keep the world safe. Purpose and aims of the League seemed admirable, but in practice there were inherent weaknesses that led to its eventual failure. ये इसका जो एम था, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए किसी बॉडी बनाना था जो कि वर्ल्ड अफेयर्स को डील कर सके। इसके एम्स क्या थे? टू स्टॉप वॉर्स, जो ग्लोबल वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एंड एनकरेज डिसआर्मामेंट, क्योंकि असलहे की तादाद को कम करे, एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड बाय इम्प्रूविंग कंडीशंस ऑफ द लेबर एंड other such like steps ले ताकि लोगों की कंडीशन इम्प्रूव हो। ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक असम्बली थी, एक काउंसिल, स्मॉल सेक्रेटेरिएट, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, a number of committees such as International Labour Organization and Health Committee. So like different committees थी इसमें। इसके strengths क्या थे? इसके main strength was that it set up a Treaty of Versailles which every nation had signed. 58 nations as a member by the 1930 to enforce its will. It could offer arbitration through Court of Justice, International Court of Justice, or apply trade sanction against countries that went to war. So ये sanctions लगा सकते थे, and just International Court of Justice के through ये arbitration offer कर सकते थे जो conflicting states थे उनको। तो इसकी कोई अपनी आर्मी नहीं थी। इसकी अभी वीकनेस क्या थी उसमें हम पढ़ेंगे। द फैक्ट दैट इट वाज सेट अप बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस व्हिच एवरी नेशन हैड इट, इसको वैसे ही अंदाज में वेलकम नहीं किया गया था। साइन किया गया था मतलब, लेकिन वेलकम नहीं किया गया था। इट वाज टू एम्बिशियस। जर्मनी, रशिया, यूएसए जो कि उस टाइम के माइटी स्टेट्स थे, वो इसका मेंबर्स नहीं थे। इसकी अपनी आर्मी नहीं था, एंड ऑर्गेनाइजेशन वाज कम्बरसम एंड द डिसीजन हैड टू बी यूनानिमस। तो उसके कुछ ये ऐसे बड़े बड़े वीकनेसेस है जो कि लाइक हाईलाइटेड है। इसके फेलियर के मेन रीजंस भी फिर यही बाद में बनते हैं। और भी कुछ इसके वीकनेस एंड फेलियर है, वो हम आगे चल के बताते हैं, डिस्कस करते हैं। बट ये इसकी मेन वीकनेस कि इसका उस टाइम की जो माइटी स्टेट्स थी वो इसका हिस्सा नहीं था। ये इसके सक्सेस एंड फेलियर पे बात करती है। तो 1920s में हम स्पेसिफिकली बात करती है। क्वाइट सक्सेसफुल इन दिस वर्क फॉर अ बेटर वर्ल्ड, टैकिंग war prisoners home, helping refugees, attacking slaves, traders and drug sellers, and supporting ways against leprosy and malaria. Quite successful in settling border dispute, जितनी भी थी उसको सॉल्व करने के लिए इसने किरदार अदा किया। लेप्रोसी एंड मलेरिया के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा काम रहा इसका। ड्रग्स एट्सेट्रा, एंड जो वार जंग की कैदी थी उसको घर वापस ले जाने में इनका एक बहुत अच्छा किरदार रहा। तो इसके अलावा रिफ्यूजीज़, जितनी वार की वजह से रिफ्यूजीज़ आए थे उनको काफ़ी हेल्प किया गया। उनके लिए कैंप्स बनाए गए, जो टर्किश रिफ्यूजीज़ थे उनके लिए रिफ्यूजीज़ कैंप बनाए गए, उनको खाना फराहम किया गया। एंड दिस ऑल वाज कैरिड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। सो इसके like a half a million prisoner of the World War One was taken back home. So this is a mighty milestone in the history of League of Nations. Another success was Ireland, Iceland, Sweden and Finland के दरमियान, जो कि accepted the league's arbitration to give the Ireland, Iceland to Finland. Ireland, Iceland को फिनलैंड को दिया गया. So it was another success of the League of Nations at that time. इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोलैंड, द पोल्स इन्वाइटेड विल्ना, द कैपिटल ऑफ लिथुआनिया, द लीग ऑर्डर पोलैंड टू विड्रॉ, पोलैंड रिफ्यूज, द लीग कुड डू नथिंग, लीग ऑफ नेशन कुछ नहीं कर सकता, पोलैंड ने रिफ्यूज़ कर दिया विड्रॉल को।
and like the League of Nations was unable to do anything against the Poland. टर्की के जो रिफ्यूजीज थी उनके लिए कैंप सेट किए गए एंड दे वर फेड एंड क्लॉथ लाइक uh, उनको खाना दिया गया, उनके लिए कैंप्स बनाए गए, लाइक उनका सारा सेटअप दिस वाज डन अंडर द अम्ब्रेला लीग ऑफ नेशन. Corfu Mussolini ignored the League's order to pull out of Corfu and made Greece pay money to Italy. So it was another failure of the League of Nations. Disarmament के जो talks थे वो भी fail हुए because Germany demanded as many weapons as everyone else has. So Germany was a mighty and powerful state at the time. So उसका अपना डिमांड था एंड उसकी वजह से फिर लीग ऑफ नेशन जिसके 58 मेंबर्स थे उसका डायलॉग फेल. ऑस्ट्रिया द लीग सेंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स टू हेल्प ऑस्ट्रिया व्हेन इट्स गवर्नमेंट बैकरप्ट. जब ऑस्ट्रिया के गवर्नमेंट स्टेट दिवालिया हो गया तो लीग ऑफ नेशन ने वहाँ एक इकोनॉमिक मिशन भेजा. Bulgaria agrees to bet the league's order to pull out of Bulgaria. 1925 में ये भी लीग ऑफ नेशन के एक सक्सेस है. बल्गारिया को हाँ बल्गारिया ने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया. Kellogg-Briand Pact, 65 countries signed a treaty to end war, but then they just ignored it. Slavs and drugs, like ये भी इसका एक ड्रग्स के बारे में ये कि 26 nations signed an international convention to combat the drugs trade. A law that's still in ये वाहिद ला है जो अभी तक एनफोर्स है. डिजीज़ जो हमने बात की मलेरियन लेप्रोसी उस टाइम के दो बड़ी डिजीज़ थे उसके अगेंस्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा लीग ऑफ नेशन. Jobs International Labour Organization failed to persuade countries to adopt a 48-hour week. Like this was not too much successful in this case. In 1935-32, Japan, member of League Council, invaded Manchuria. It took the League nearly a year to send a commission and declare that Japan ought to leave, whereupon Japan left the League. बजाय ऐसे कि जापान लीग ऑफ नेशन की बात मानता, जापान लेफ्ट लीग ऑफ नेशन. जापान ने बात मानने के बजाय लीग ऑफ नेशन को ही छोड़ दिया. एंड लिटरली लीग ऑफ नेशन वाज अनएबल टू डू एनीथिंग और टेक एनी स्टेप. सो बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर जापान भी उस टाइम का एक पावरफुल स्टेट था. सो लीग ऑफ नेशन वाज अनएबल टू डू एनीथिंग अगेंस्ट जापान. और उसको 1935 में हम बात करें तो इटली इन्वेडेड द बसीनिया. ऑल्दो द बसीनिया एम्पायर वो खुद गया लीग ऑफ नेशन के उससे हेल्प मांगे. लीग वॉज टू बैन आर्म सेल बैन किया गया एंड उसको अबासीनिया को ज़्यादा नुकसान हुआ इटली से उस आर्म बैन से. फिर अब इटली को एक पार्ट अबासीनिया ऑफर किया गया बट उन्होंने खुद ही वो इलाका कंकर किया था, इन्वेट किया था. Like League of Nations was unable to do anything against the Italy. League of Nations 19, it became clear that if a strong nation was prepared to ignore the League would do nothing. अगर एक mighty and powerful स्टेट उसको उस टाइम इग्नोर करता, सैंक्शंस भी यूजलेस थे, फिर कुछ भी वो नहीं कर सकता था लीग ऑफ नेशन. स्मॉल नेशन जो थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि लीग कुड डू नथिंग एंड वुड नॉट प्रोटेक्ट देम. Britain and France decided that the League was useless to stop war and followed instead the policy of appeasement. Hitler was encouraged to move ahead with his plans. ये कुछ अदर फेलियर्स है 1935. और इसके रीज़न क्या थे? मैं रीज़न ये था कि the league's power were little more than going tit-tat. Sanctions did not work. It had no army. America, strongest nation in the world, never joined the League of Nations. Britain and France were not strong enough to impose peace on their own. इसके structure में भी problems थे, so it took ages to do anything. Members could not agree, but decision had to be unanimous. This paralyzed the League. The League was literally a paralyzed body. Depression उस टाइम आया था 1928, 29, 30. उस टाइम में the depression hit the world badly and unsuccessful because the more the league failed, the less people trusted it, and then everybody just ignored it कि ये भी हमारे लिए कुछ कर सकता है या इन द एंड हमें प्रोटेक्ट कर सकता है.
So it was some other reasons में ये है कि member the league ban member let it down. Italy and Japan betrayed the league. France and Britain did nothing to help it. In 1920s, the league had deal with the weak countries. In 1930s, powerful countries like Germany, Italy, and Japan attacked weaker countries. They were too strong for the league to stop them. Like League of Nations was unable to stop the mighty countries to attacking on the weaker countries. So guys, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अल्लाह हाफिज़.